Okay, let us start the lecture. तो हम कर रहे थे ज़ीरो सिंपल सेमी ग्रुप्स और सिंपल सेमी ग्रुप्स. तो ऑलमोस्ट हमने किया है कंप्लीट है, बस एक रिजल्ट इसमें है जो हम आज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज. So let's do the following exercise first. Suppose that B is an ideal of S. Suppose that B is an ideal of S. B is an ideal of S such that IA is contained or equal to B, but B is it's not equal to G. B is subset of this, but it's not equal to G. G is a two-sided principal ideal generated by A. Show that this B it's equal to, then show that IA is equal to B. That means there is no ideal between IA and G. Okay, then IA is equal to B. Solution. So we show that B is subset of IA. Okay, IA is subset of B. Now we show that B is subset of IA. So let's choose an element B in B which is not in GE. So let B be in B, and this B is not in GE. Sorry, I cannot choose this, like B is in B only. Okay, choose this B is in B. So this B is strictly contained in GE, okay, and IA is also strictly contained in GE. So if B is in B, then the principal two-sided ideal generated by B, which is the smallest ideal containing B, is contained in B, where B is strictly contained in GE. So therefore the J class of B is strictly less than J class of A under the relation of this. So it implies that this B it is in IA by definition of IA. So thus any element B in B is in IA. So thus B is equal to IA. B is equal to IA. So remark. By proposition 3.1.5 we deduce that the Rees quotient by proposition 3.1.5 जो इससे पहले हमने जो प्रपोजिशन की है ना 3.1.5, जहाँ पर हमने बताया था अगर कोई आइडियल नहीं होगा दो आइडियल इसके बीच में. So by that proposition 3.1.5 we deduce that the quotient this JA over IA, it's a quotient. IA is ideal of JA. This quotient
Okay, is either zero simple semigroup, is either zero simple semigroup, is either zero simple semigroup, zero simple semigroup, or a null semigroup, or a null semigroup. So by that propose. So these ideals, the semigroups Ks, Ja over I belongs to A belongs to A. So the semigroups they are called principal factors. The semigroups Ks, which is the unique minimal ideal, it is also semigroup. And this semigroup Ja over Ia, this semigroup, this one, where A is in S, where A belongs to S, where A belongs to S. These semigroups, they are called the principal factors of S, are called the principal factors of S. Okay, so next we have following theorem. It follows from these exercises actually. A theorem is the following. That's the last theorem of this section. If A is an element of a semigroup S, if A is an element of a semigroup S, if A is an element of a semigroup S, then either J class of A is the kernel of S, मतलब मिनिमल है ना, J जो आपने किया है एक से देखो, J is either the J is then either J is the kernel, okay, J is the kernel, then either J is the kernel of S, okay, जो आपने किया है J is, आपने किया ना J class of A is equal to the principal ideal J is the kernel, और दोनों S के बराबर आपने दिखाई, is the kernel of S. Or second, if it's not the kernel, in that case the set जो आपने फिर IA कंस्ट्रक्ट किया, the set IA or the elements be such that J be less than J, so that means this J is not kernel, okay, it's not minimal ideal. This set J be less than JA is a non-empty and is an ideal. ये जो set है is non-empty because in that case J is not minimal. वो मैंने वहाँ पर पूरा डिस्कस किया, हाउ दिस J class of A is an ideal, हमने वहाँ पर पूरी तरह से, otherwise the J class are not ideal, but J class of A is equal to the principal ideal generated by A, वो हमने बता दिया वहाँ पर आपको, अगर ये मिनिमल होगा तो, अगर ये मिनिमल नहीं होगा तो आपके पास ये सेट होगा जो कि नॉन एम्प्टी होगा, और ये हमने चेक भी किया कि ये आइडियल है. सो द सेट I इज नॉन एम्प्टी, is non-empty, okay, and is an ideal of J of A, okay, principal ideal J of A. यहाँ पर हम लिख देंगे इट्स S1A S1, ये है प्रिंसिपल आइडियल, सच दैट, ये भी हमने चेक किया, सच दैट दिस J क्लास ऑफ ये इसका आइडियल है, और जो कोशेंट जो होगा, कोशेंट सेमीग्रुप इट is zero simple or is either zero simple or null, is either zero simple or null, zero simple semigroup or null semigroup. So the proof follows from above exercises.
तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर पर डायरेक्ट आ जाएंगे। फोर्थ यूनिट पर हम डायरेक्ट आ जाएंगे इसके बाद। ओके, फोर्थ यूनिट हमारा। तो फोर्थ यूनिट जो है वो सिस्टम्स या एक्शन, सेमीग्रुप एक्शन से स्टार्ट हो रहा है, या सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो ये जो बुक है इसमें सिस्टम्स ही इसका नाम लिखा है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। सिस्टम्स, दैट्स नंबर यूनिट 4 की सिस्टम्स। तो जैसे आपने ग्रुप एक्शन किया है वैसे, या आपने लेफ्ट मॉड्यूल राइट मॉड्यूल किया होगा, है ना, मॉड्यूल इज ओवर अ रिंग। ओके, तो सिस्टम्स इज एक्चुअली ओवर ए सेमी ग्रुप, या आपने वेक्टर स्पेस किया होगी, वेक्टर स्पेस इज ओवर ए फील्ड, ओवर फील्ड। तो सिस्टम क्या होता है, इट्स ओवर सेमी ग्रुप। ओवर मतलब यहाँ पर जो स्केलर्स होते हैं वो सेमी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, और जो वेक्टर्स होते हैं वो यही आपका गिवन सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट। और वेक्टर स्पेस में वो जो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, वेक्टर स्पेस, वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एडिटिव स्ट्रक्चर ऑन सेमी ग्रुप एस, देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर, दैट्स मल्टीप्लिकेशन। सो we try to generalize actually that concept, that vector space or modules in case of ring theory, left module right or module, तो हम उनको जनरलाइज करना चाहते हैं सेमी ग्रुप्स के केस में। So let S be a monite, let S be a monite with identity element 1, with identity element 1. Let S be a monite with identity element 1. Okay, and let capital X be a non-empty set, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, and let capital X be a non-empty set. We say that X is a left S system, left S system, left S system. If there is an action, if there is an action, actually a map, there is an action, there is an action which maps the pair Sx to Sx, ये नोटेशन हम करेंगे जिससे जो Sx को Sx तक लाए। तो एक्चुअली हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन नोटेशन ही यूज करते हैं इस एक्शन के लिए भी, इस मैप के लिए भी। It's a map from, this action is a map from, there is an action, it's a mapping from S cross X to, sorry, it's S cross X, okay, S cross X, it's a cross product, S cross X to X. That's it, maps the pair S comma X, where S is in S, small x is in X. This pair maps onto the element of S, which we denote by Sx. So Sx is an element of X, such that it has the following properties, this map, such that this so it's a map from S cross X to X. It is understood that S is in S, and that small x, it is in this capital X. Okay, it's understood from the definition of map actually, such that it satisfies the following property. So left means this S is on left side. Okay, अगर right हम define करेंगे तो S right side में होगा, such that
एस टी एक्स, एस टी जो है ना ये सेमी ग्रुप के मेंबर्स, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है ये सेमी ग्रुप का ऑपरेशन है, और ये एक्स है, ये एक्स का मेंबर है, तो अब एस टी ये सेमी ग्रुप का एलिमेंट है, और ये एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स का। अब ये जो बीच में ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपके इट्स दैट एक्शन एक्चुअली जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, दिस शुड बी इक्वल टू एस टी एक्स। तो यहाँ पर हर कोई ऑपरेशन एक्शन का ही है, यहाँ पर ये जो है फर्स्ट ऑपरेशन जो यहाँ पर है एस के साथ इट्स एक्शन, और टी के साथ जो ऑपरेशन वो भी एक्शन, बिकॉज टी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स, तो एलिमेंट ऑफ एक्स और एलिमेंट ऑफ एस के दरमियान जो ऑपरेशन है दैट्स फ्रॉम द एक्शन एक्चुअली, लेफ्ट एस एक्शन। ओके, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स क्योंकि सेमी ग्रुप के थे इसलिए ये ऑपरेशन सेमी ग्रुप का था, और ये एलिमेंट एक्स एक्स का था, तो ये एक्स का एलिमेंट है, और ये एस टी एस का एलिमेंट है, तो दैट्स व्हाई दिस ऑपरेशन इज एक्चुअली फ्रॉम दिस लेफ्ट एस एक्शन। तो यहाँ पर कोई भी आपके पास आप देखिए सेमी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट नहीं है आपके पास, एस अलग है, टी एक्स अलग है, टी एक्स अब एक्स का एलिमेंट है, तो टी एक्स अब एक्स का एलिमेंट है, तो एक्स के एलिमेंट को साथ आपको एस का एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करना है, तो दैट प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ एस एक्शन। So it satisfies this property, first property, and the second property, the this one, it is in S, 1x, x is in x, okay, 1x should be equal to x. This is true for all st in S and x in x. तो इसको एस एक्ट भी कहते हैं, एस सेट भी कहते हैं, इस एक्स को ना, एक्स को एस एक्ट भी कहते हैं, एस सेट भी कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम्स है, आप कोई भी नाम दे सकते हो उसका। तो वी यूज दिस लेफ्ट एस सिस्टम थ्रू आउट दिस चैप्टर, लेफ्ट एस सिस्टम और राइट एस सिस्टम। सो नेक्स्ट वी डिफाइन राइट एस सिस्टम, राइट एस सिस्टम। ओके, व्हाट इज राइट एस सिस्टम? A non-empty set X is a right as system, is a right as system, is a right as system if there is an action, if there is an action, if there is an action, okay, which maps the pair xs, so s the right side to, that's the notation axis, okay, from x cross s, okay, x cross s to x, such that आप लिखिए into यहाँ पर, into this arrow, into, such that xst is equal to xst for all x in x and this st in s, okay. And the second property is, sorry, it's x1 here now, x1, second property, x1 should be equal to x for all x in x. That's the definition of right as system. Now we define bi system, which is both for this we have two semigroups actually. They may be different or they may be same. So also if S and T, they are semigroups, they are monoids, not semigroups, not necessarily different जरूरी नहीं, equal भी हो सके, not necessarily different. Monoids, we say that X is an, we
say that this x, S and T are monoids, two monoids, okay? We say that x is an ST by system, okay? ST by system. हम कहेंगे x ST by system है if अगर x होगा, if x is a left as system, क्योंकि s लेफ्ट साइड में है नोटेशन में, जो आप t राइट साइड में, okay? if x is a left as system, x लेफ्ट as system होगा, राइट as system, राइट t system भी होगा, राइट टी सिस्टम, एक तो लेफ्ट एस सिस्टम होगा, दूसरा राइट टी सिस्टम भी होगा, एक्स दोनों। एंड और एक प्रॉपर्टी इसके पास होगी, एंड इफ, अब इन दोनों को मतलब कंपैटिबिलिटी ऑफ टेकिंग टू टुगेदर है, एस एंड टी लेफ्ट एंड राइट टुगेदर, तो इनके साथ इनमें क्या कंपैटिबिलिटी होगी, दैट्स दिस एस एक्स टी, मतलब पहले मैं एक्स को लूंगा, टी के साथ एक्शन करूंगा, राइट एक्शन। दिस शुड बी इक्वल टू, अगर मैं एक्स पहले इसके साथ रखूंगा, एस के साथ लेफ्ट एक्शन मैं पहले इस पर अप्लाई करूंगा, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, टी बिलोंग्स टू टी, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। So these are the definitions: the left as system, right as system, ST by system. अब इनकी नोटेशन है, अगर x लेफ्ट एज सिस्टम होगा तो इसके लिए हम कौन सी नोटेशन यूज करेंगे? इफ x इज a left as system, then we write x belongs to s dash ens, okay, ens, तो s dash ens मतलब it's the set of all left as systems, तो अगर x left as system और हम कहेंगे x belongs to this s ens. So similarly, if x is right as system, we say x belongs to ens. Similarly, if x is a right as system, then we write s of the right side होगा ens dash s. If x is an st by system, if x is an st by system, अगर ये st by system होगा, then we write this x belongs to s left है s dash ens dash t. This is the notation. ens क्यों? तो ये नोटेशन है इसकी, आप इसको सम फ्रेंच नोटेशन कुछ है ये, s ens ens s s ens t. ओके सर, ओके। और एक नोटेशन है, अगर x लेफ्ट एज सिस्टम हो ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते, x फिर s सबस्क्रिप्ट but on left side, okay, this means x is left as system, okay. इसी तरह से x अगर right as system होगा तो हम x के right side में लिखेंगे s सबस्क्रिप्ट x sub s, okay, x sub s, but it's left sub s, it's right sub s, you can see.
So this means X is the left S system and this means X is right S system. So now in case our monoid is a commutative monoid, then there is no distinction between left and right S systems. So whenever X is left S, then it's always a right S. जैसे मॉड्यूल्स के केस में आपने किया होगा, अगर आपके पास commutative ring होगी आपके पास, then every left R module, if R is a commutative ring, then every left R module is also a right R module. It's actually a bimodule in that case. So in a similar way, we will show that if your some monoid is the commutative monoid, then every left S system, अगर X left S system होगा, then it's always a right S system also. Okay, so let's do that theorem. Then we do some exercises, examples on this left and right S systems. Okay. So let S be a commutative monoid. Let S be a commutative monoid. It's a commutative monoid. And if X belongs to SENS, means X is left S system, then X also belongs to ENSS. It's also a right S system. Proof. तो लेफ्ट तो है, अब हम राइट डिफाइन करेंगे. लेट्स डिफाइन द एक्शन पार्ट. So define an action from right आपको प्रोग्राम from X cross S to X by the pair XS goes to. Let's define this by the image of this is X star S, okay, and we define it by Sx. Sx आपके पास ऑलरेडी X लेफ्ट S सिस्टम है, तो Sx राइट को मैंने स्टार से डिनोट किया, ओके, लेफ्ट को मैंने ऐसे रखा मल्टीप्लिकेशन में ही. सो दिस इज इन X because X belongs to SENS, ओके. तो मैं X स्टार S डिफाइन करूंगा Sx, ओके, या डायरेक्टली मैं ये कहता हूँ इसकी इमेज में लूंगा Sx. So I will show that with respect to this action, this X it is a right S system. It's a right S system. तो right S system के लिए सबसे पहले क्या करें? It's a map from, obviously it's a map from X cross S to S because this element Sx it is in X. And its preimage X comma S, which is in X cross S. So this is a map from X cross S to X. That's clear. Now we check the property that now let's take two elements that ST belongs to S, X belongs to X. आपको ये property check करनी है. X star ST it is a simple story. X star आपको प्रूव करना है this is equal to X star S star T, okay, is star A. But by definition this is STX, okay, this is STX. Now our semigroup is commutative, it's TSX.
again you can apply the action property from the left because it's a left S system. X is a left S system, so it's equal to T Sx. It's equal to T Sx because X is left S system, and this is equal to, now this one you can write this T times, okay, this Sx is, it means that it is X star, sorry circle नहीं है इसमें, just star X star S, okay. Now this is an element of X again, and this is T times the element of X, that's again by definition X star S star T. So thus we have seen that X star St is equal to X star S star T. And finally the identity property, finally X star 1, by definition it's equal to 1x, but X left S system it's equal to X for all X in X. So therefore X belongs to right S, okay. यहाँ पर राइट साइड में लिखना था कि इट इज लेफ्ट में लिखना था ना, यहाँ पर ये एस ई एन एस, ओके, लेफ्ट एस सिस्टम. अब राइट एस आ गया, एक्स बिलोंग्स टू राइट एस ई एन एस एस. So any set down a bit set X can be recorded as a 1-1 by system, where 1 is a trivial monoid, it's only consisting of identity. Oh, that's an example. Any non-empty set X can be regarded as a 1-1, can be regarded as this. So both the semigroups are equal, both consisting of only one element, 1. This is 1-1 by system. Where, what's this one? This one is a trivial monoid, is a trivial monoid consisting of only one element. So यहाँ पर आप लेफ्ट एक्शन कैसे डिफाइन करोगे? आपको एक ही एलिमेंट चेक करना है ना, x और 1 की इमेज देखनी है, वो x ही लो, और 1x की इमेज वो भी आप x ही लो. So this is your action, ठीक है. आपको एक ही एलिमेंट पर एक्शन देखना है, 1, only 1, okay. So with respect to this action it's a by system. तो अगर आप ये चेक कर x 1s x, it is बाय सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना, ये s दोनों साइड से है, s का सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 1x1, इट्स इक्वल टू 1x1, ये इसके बराबर है, और एवरीथिंग इज इक्वल टू x एक्चुअली. बाय सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके पास होनी चाहिए, तो लेफ्ट s, दूसरा राइट s, एंड देन द एडिशनल प्रॉपर्टी sxt इक्वल टू sxt. तो यहाँ पर s और t दोनों 1 के बराबर है, बिकॉज वी हैव अ ट्रिवियल मोनोइड हियर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, दैट्स 1. तो इसी तरह से हम सब सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन सब सिस्टम, जैसे सब स्पेस, सब वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर, वैसे सब सिस्टम हम डिफाइन करेंगे. सब सिस्टम, a subsystem of a left S system
system of a left S system is a subset y of x. ये पहली y x का subset of a left S system x is a subset y of x such that when you restrict your this action to y, such that this sy, okay, sy should be subset of y. sy should be subset of y का मतलब क्या है? That is for all s in s, y in y. ये जो होगा आपका sy, this should be in y. ये y नहीं होना चाहिए, y x का सबसेट है. तो एक्चुअली जो गिवन एक्शन है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है? s क्रॉस x से लेकर x तक. तो जब आप इसको y पर रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, s क्रॉस y, ये s क्रॉस y टू y आना चाहिए. जैसे ये x है, ये इसका y सबसेट है, ठीक है, y इसका सबसेट है, ये x है. तो जो आउटपुट है वो तो वापस x में ही चला जाता है. जब भी आप इसके यहाँ से कोई s सेमी ग्रुप लोगे s, तो जो पेयर्स आप लोगे s और x के साथ, जो पेयर्स आप लोगे वो वापस x में आ जाएगी, ठीक है. अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इस y का कोई एलिमेंट लो और s का कोई एलिमेंट लो, वो जो पेयर होगी वो फिर y में ही होगी. ये सब वो यहाँ पर भी हो सकती है, बट अगर वो वापस y में आ जाए, उस केस में हम कहेंगे y सब सिस्टम. जैसे सब स्पेस की हम बात करते हैं ना, अगर v वेक्टर स्पेस है, w सबसेट है v का, w को हम तभी सब स्पेस कहेंगे. फर्स्ट इट शुड बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दैट मींस फॉर ऑल अल्फा इन k एंड फॉर ऑल w इन w, अल्फा w शुड बी इन w. इन जनरल तो अल्फा w v में होगा ही, बिकॉज v इज अ वेक्टर स्पेस, बट इट शुड बी इन w. अगर w चाहिए आपको ये सब स्पेस हो वेक्टर स्पेस v का. तो वैसे यहाँ पर भी है sy जो है, बिकॉज फॉर ऑल x इन x, s इन s x जो है वो x में है, तो sy भी x में है. मगर अगर आप चाहते हो कि ये जो y है ये सब स्पेस हो, तो देन दिस प्रोडक्ट, देन दिस एक्शन शुड बी इन y. ये y का मेंबर होना चाहिए. सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सब सिस्टम. अब वहां पर भी जैसे आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन करते हैं बिटवीन द वेक्टर स्पेसेस v एंड w over the same field, you define this phi of alpha x should be equal to alpha times phi of x, है ना. तो स्केलर बाहर आना चाहिए. अब यहाँ पर नोटेशन तो इस तरह से है, अल्फा x ऑफ phi, क्योंकि हमने एलिमेंट को लेफ्ट साइड में लिखा, दिस शुड बी अल्फा टाइम्स x phi. अगर आप चाहते हो कि phi लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो ये प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए. सेकंड इज द एडिटिव प्रॉपर्टी दैट शुड बी देयर, phi of x plus phi equal to phi x plus phi. बट दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर सेमीग्रुप्स के केस में हमारे पास सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें वही प्रॉपर्टी चेक करनी है. तो इसको हम कहते हैं ये मॉर्फिज्म है वेक्टर स्पेस में, और वी कैन से इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो कैटेगोरिकल सेंस में इसको मॉर्फिज्म कहते हैं, मॉर्फिज्म इन वेक्टर स्पेसेस, इफ इट्स क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इफ इट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो सिस्टम्स में क्या है? सिस्टम्स में मॉर्फिज्म किसको कहेंगे? इफ इट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओनली, बिकॉज वी डोंट हैव एडिटिव स्ट्रक्चर हियर. So let's define a morphism in case of systems. We must take two left S systems, okay, over the same semigroup or the same monoid. जैसे linear transformation you can define between the vector space over the same field, over the same, वैसे यहाँ पर भी over the same monoid. So let's take let x and y be left as systems. Let x and y be left as systems. A mapping phi from x to y. A mapping phi from x to y. A mapping phi from x to y. A mapping phi from x to y is called a morphism, or you can say S-morphism. Is called a morphism.
or S morphism. You can see if it has the following property, left S system, तो S left side में होगा, Sx image of this under phi should be equal to, ये S scalar है, ये बाहर आना चाहिए, S times x phi for all S in S, x in x. Okay, so this is the definition of morphism in case of systems. Similarly, you can define the morphism between the right S systems. Okay, तो वहाँ पर S आपको right side लेना पड़ेगा, S x S आपको लिखना पड़ेगा, और ये S है ना, ये right side ही बाहर जाएगा, हाँ? तो वहाँ पर ये होगा आपके पास, अगर आप right डिफाइन करना चाहोगे, it's x s phi equal to x phi s. So it should be like this. So next we define congruence on left S system. So obviously it first should be an equivalence relation, second it should be compatible with respect to left S action, with respect to left action. Okay, so that's the definition of congruence here. Congruence, तो आपको दोनों नहीं लेनी, लेफ्ट एंड राइट नहीं ले, आपको सिर्फ मतलब एक ही देखना। लेफ्ट एस सिस्टम जब आप देखोगे तो लेफ्ट कंपैटिबिलिटी आपको सिर्फ चेक करनी, उसको कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंस, अगर वो इक्विवेलेंस भी होगा और लेफ्ट कंपैटिबिलिटी को प्रिजर्व करेंगे. That's the definition of congruence here, because we are dealing only with left S systems. Okay, अगर आप right S system में जाओगे तो वहाँ पर right side आपको देखना पड़ेगा. Now if you are in the by systems, तो वहाँ पर obviously आपको दोनों sides आपको देखनी, left as well as right. So it depends on the category actually, आप कौन सी category लो. A congruence on a left S system. Congruence on a left S system X. Okay, X the left S system. A congruence on a left S system X is an equivalence on X. It should be an equivalence first. Is an equivalence on X. And what's second? With the property that for all x y in X and S in S, if X is row related to Y, अगर ये row related to Y, then this should imply X S should be row related to not X S, Sx, left side. This is Sx. Sx, okay. Sx should be row related to, it is row here, row related to S Y. Now, you know, in case of semigroups, whenever we are talking about congruences, then we can define the quotient actually, quotient of semigroup, in case of semigroups. So therefore, when we have a congruence on systems, we can define the quotient system. Quotient semigroup, not quotient system, quotient system हम define करते हैं यहाँ पर systems में, left S systems में. So the quotient now, because X is a congruence, so X over row, it means the set of equivalences which are generated or which are induced by an equivalence row, X over row. The quotient X over row, okay. What's this? It is the set of the row classes, okay. X row, X in X. This quotient. This is a left S system. It's also a left S system. Is a
लेफ्ट एस सिस्टम। अगर एक्स लेफ्ट एस सिस्टम है, रो कॉन्ग्रुएंस होगी, तो ये जो क्वोशिएंट होगा ये भी लेफ्ट एस सिस्टम होगा। वायर द एक्शन इज डिफाइंड बाय क्योंकि जब भी आप कहोगे लेफ्ट एस सिस्टम, आपके पास एक्शन होना चाहिए और उसकी वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वायर द एक्शन is defined by where the action is defined by क्योंकि लेफ्ट एस तो एस लेफ्ट साइड, लेफ्ट एस सिस्टम किसको आपको प्रूव करना, लेफ्ट एस सिस्टम एक्स ओवर रो, तो आपको ये एक्स रो के साथ प्रोडक्ट इसका देखना, इसको डिफाइन करना है ना। दिस इज इक्वल टू, अब एस एक्स तो डिफाइंड है ही, बिकॉज एक्स इज लेफ्ट एस सिस्टम, एक्स एस का एक्स का मेंबर है, एस एस का मेंबर, दिस इज डिफाइंड, सो दिस लाइक दिस रो क्लास ऑफ एस एक्स। अब क्योंकि एस एक्स अब एक्स का ही मेंबर है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे एक्शन। देन you can easily check the properties, then you can see this st x row, this should be s of tx row, and by definition this is equal to st x row ना। हम सीधा ही इस x का प्रोडक्ट लेते हैं एलिमेंट के साथ, जो मोनाइड का एलिमेंट है, यहाँ पर मोनाइड का एलिमेंट st है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए आपका जो x का मेंबर है और st मोनाइड के मेंबर्स है, एलिमेंट्स है, तो यू कैन अप्लाई द लेफ्ट एस सिस्टम प्रॉपर्टी ऑफ x बिकॉज x इज अ लेफ्ट एस सिस्टम, सो इट्स इक्वल टू एस tx ऑफ रो। अब ये जो tx है ये x का मेंबर है, s का मेंबर है, इस s को हम बाहर निकाल सकते बाय डेफिनेशन, s को अंदर भी ला सकते हो और बाहर भी निकाल सकते हैं, sx रो इसको तो s टाइम्स x रो। तो यहाँ पर भी s tx रो है, x की जगह पर tx है और s तो ऐसी है, इट्स इक्वल टू s टाइम्स tx रो। तो s tx रो इक्वल टू s tx रो, और अगेन दिस इज इक्वल टू s, t को आप बाहर निकाल t देन x रो। ये आप सिस्टम का मेंबर ये है, जो x और रो है, ये सेमी ग्रुप्स के मेंबर्स है। तो फाइनल जो प्रॉपर्टीज के वो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी वो भी ओबियसली आ ही जाएगी। देन दिस एंड व्हाट्स दिस वन x row, by definition it's equal to 1x of row, but 1x equal to x because x is left hand system, it's x row, so 1 times x row is equal to x row, so therefore this x row is a left hand system। तो जब आपके पास कोशिएंट आता then you can define the natural maps, है ना, natural morphism। Now we can define that natural map from x to x over row, which we denote by row natural. So define a morphism, row natural. Now define a morphism. Now define a map. Okay, let's define this map, which we call the row natural, which you denote the row natural, okay, row natural from x to x over row, by which maps each element of x to its row class, okay, to its row class of x row में है। Then we check this is a morphism, and then this sx row natural, this should be called s times x row natural. Now first we apply the definition, it's equal to sx row. Now since row is a congruence, so by definition of congruence this is s times x row, this is equal to s times, what's this x row? X row is x row natural, so s times sx row natural is equal to s times x row natural, so
So therefore rho natural is a morphism. Is a morphism or is an S-morphism. Is a morphism. Is a morphism. Or you can say S-morphism. S-morphism. So this is also surjective. This row natural is also surjective, because whenever you take a pair, whenever you take a member in X over row, so that is actually a row class of some element. So there must be some X row, but X row is an image of X under row natural. So for any member in this X row, we have an element of X, such that image of that element is X row. So that's trivial. This row natural is surjective. So clearly row natural is surjective. This is surjective. You can say on to. कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, इसके रिलेटेड एनी क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया है सिस्टम्स के बारे में? So next is the smallest congruence containing the relation R. Okay, smallest congruence. Since the intersection of any non-empty collection of congruences is again a congruence. Since सर आज जितना ही पढ़ते थे बस इस कॉन्ग्रेंस को फिनिश कर लीजिए. Since the intersection of non-empty class of any non-empty collection, non-empty class of congruences is again a congruence, is again a congruence. So therefore given a relation R, therefore give a relation R on a left S system, on a left any relation, it's not a congruence, on left S system R sharp denotes the smallest congruence, denotes the smallest congruence containing R, and it is the intersection of all congruences, and it is ये जो congruence होगी smallest congruence containing R, it is the intersection of all congruences containing R, and it is the intersection of all congruences containing R. And it is the intersection of all congruences containing R, Now next, we define this relation, define RC. Given a relation R, we can define RC, which is this relation, which is the set of the pairs SA, SB, such that S is in a monoid S and the pair AB, it is in R.
So let's define this here, okay? This set of pairs. So you can see this RC, it's actually a compatible relation. Check its compatibility. So whenever we have a pair in RC, then for any pair XY in RC and S in S, SX SY, it also belongs to RC. ये भी RC में होगा. So that is if X is RC related to Y, then Sx is RC related to Sy for all S in S. This is very simple since XY is in RC. XY क्योंकि RC में है, it implies that this XY is of this type. It's of this type. Say, let's write this as, it's like this T1A by definition of RC and T2B, where T1, T2 they are in S and the pair AB is in R. So this implies so what's this SX SY? Okay. SX SY. तो ये आप देख सकते हो, x की जगह पर x क्योंकि T1A है तो SX क्या है, ST1A के S, sorry it's S only, ST1A, then S is it, I think it is same, it's not different, this T one minute, yes, so this is just a T, not this. Okay, this is not T1, okay, this is T. T belongs to this. So this is STA, then STB. Now you can apply the property of action. It's STA, STB. So it's equal to the pair STA, STB. But this one it is in RC because ST belongs to S and the pair AB it is in R. तो अब आपको वही रिजल्ट देखना है जो हमने यहाँ पर किया है इस केस में ना, सेमी ग्रुप्स के केस में. दैट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू, होम असाइनमेंट आपके लिए. show that this R sharp given a relation R, this R sharp is equal to R C E. Okay, for any relation R, for any relation R on a left S system, X. तो सोल्यूशन इसका असाइनमेंट, ओके, ये आप देख लीजिए.